Hello students, good evening. I am Sadiq Ali Khan. Welcome to my YouTube channel Class with Sadiq sir. Today we will read about multiplying fractions. First, in this video, first we read about multiplying a whole number by fractions. Let us see. For example, 3 multiply 4 upon 6. Suppose that 3 example, for example, question is a 3 multiply 4 upon 6. There is 3 is a whole number and 4 upon 6 is a fractions. There is given 3 is a whole number and 4 upon 6 as a given there is a fractions. So fraction किसको कहेंगे? 4 upon 6 is a fraction because 4 upon 6 is form of numerator upon denominator. इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं? फ्रैक्शन कह रहे हैं. ओके, सो 3 is a whole number. Whole number start from 0 and natural number start from 1. Okay, now first things in this case, if you multiply a whole number by a fractions, in this case first write the whole number as a fractions. So there is whole number is 3, write a fraction, write the whole number as a fraction. So 3 upon 1, किसी भी नंबर के अपोन में 1 करते हैं, डिनोमिनेटर उसका 1 करते हैं. जैसे 3 अपॉन 1 है, ये आपने 1 किया तो 1 से डिवाइड करेंगे, कोई वैल्यू में चेंज नहीं आएगा, नो चेंज रहेगा, तो 3 अपॉन 1 कर सकते हो. ओके, फ्रैक्शन. नाउ मल्टीप्लाई सिंपल. नाउ 4 अपॉन 6. इन दिस केस first step is write the whole number as a fraction. So write there 3 upon 1. Now multiply symbol 4 upon 6. Okay, in this case second step, multiply the numerator. This is numerator, first numerator and then second numerator. Numerator multiply numerator. 3 4 ja 12. 3 into 4. In second step, multiply the numerator. 3 4 ja 12. Okay, write the 12. Okay, now denominator multiply denominator. Sorry, 1 into 6. Now write there reduce to the simplest form. Okay, now cancel out by their HCF, numerator and denominator. Find the HCF of numerator and denominator. Now cancel out by, now divide by their HCF. HCF is 12 and 6 is 6. Now cancel out by 6 2 times and 1 time. Now 2 divided by 1 is 2. Okay, suppose that we take more example. Now second example is, suppose that there is given 14 and 5 upon 6. 14 multiply 5 upon 14 multiply 5 upon 7. Okay, so first thing there is look at the given questions. Okay, so there is a find out the which is whole number. Whole number is 14. So first thing is write the whole number as a fraction. So write the 14 upon 1. Okay, now multiply 5 upon 7. Okay, now numerator multiply numerator. Okay, 14 5 70. Okay, now this is 1 into 7. Now cancel out by their HCF. Now cancel out by their HCF. So HCF of denominator and numerator, and denominator is 7. So cancel out by 7. Okay, 10 upon 1. 7 10 ja 70 and 7 1 ja 7. Okay, 10 divided by 1. So answer is 10. इस क्वेश्चन में आप डायरेक्ट भी कैंसिल आउट कर सकते हो. जैसे आपको क्या करना है, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से कैंसिल आउट नहीं कर सकते, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से कैंसिल आउट नहीं कर सकते. न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से कर सकते हो और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर से कर सकते हो. नाउ 7 1 ja 7, 7 2 ja 14. You can direct cancel out. Okay, now there is 2 multiply. Okay, 2 multiply. Now downside numerator denominator multiply denominator, 1 into 1. So answer is 10 upon 1. So answer is 10. Answer are same. दोनों कंडीशन में आंसर क्या रहेगा? 7 रहेगा. ओके, नेक्स्ट. नाउ वी टेक नेक्स्ट एग्जांपल. सपोज दैट गिवन 7 upon 9 multiplied by 9. 7 upon 9 multiply 9. So write there. First things, look at the whole number. So this whole number is 9. So write that as a fractions. Okay, whole number. Write the whole number as a fractions. Okay, first thing is write the whole number as a fractions. So 9 upon 1. Now cancel out. 9 1 ja 9, 9 1 ja 9. Okay, so 7 into 1 upon 1 into 1. Multiply by the numerators. So 7
and multiply by the denominators. 7 upon 1, answer is 7. Now 7 divided by 1. Okay. Now in this multiply fraction, in this second case, multiplying a fraction by fractions. So second topic is multiplying a fraction by fractions. Multiplying a fraction by fractions. Now we read about multiplying a fraction by fractions. अब आपको क्या दिया होगा, दोनों ही फ्रैक्शन दी होगी. अब आपको वो नंबर नहीं दिया होगा. सपोज दैट एग्जांपल इज 7 upon 8 and multiply 2 upon 3. Question is there, 7 upon 8 multiply 2 upon 3. Okay. Now first step, in this case first step, numerator multiply numerator. So answer is 7 2 is 14. Okay. Now add 3 is denominator multiply denominator. Add 3 is 24. Now cancel out by their HCF. Their HCF means इन दोनों का HCF फाइंड करना है. Find the HCF of numerator and denominator. Okay. Numerator and denominator. The HCF of numerator and denominator is 2. So now cancel out by 2. 7 times, now 12 times. Okay. So 7 upon 12 is the simplest form of 14 upon 24 because 7 and 12 are co-prime numbers. Okay. So answer is 7 upon 12. Suppose that next question is, there is given 2 upon 3 multiply 33 upon 22. इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते हो. न्यूमरेटर मल्टीप्लाई न्यूमरेटर. ओके. 66. नाउ 23 22 3 is 66. Numerator multiply numerator, denominator multiply denominator. So 66 divided by 66, answer is 1. ओके. सपोज दैट आप कैंसिल आउट करते हैं इसी क्वेश्चन को. 2 upon 3 इस मेथड से करते हैं, कैंसिल आउट करते हैं डायरेक्ट. 2 1 जा 2 11 टाइम. ओके. 11 2 जा 22. नाउ कैंसिल आउट. 3 1 जा 3, 11 3 जा 33. नाउ देयर इज numerator is 1 into numerator multiply numerator 1 into 11. Now the term side denominator is 1 into 11. Okay, answer is 11 upon 11. So answer is 11 divided by 11. So is 1. Answers are same. Okay. So now we read about multiplicative inverse or reciprocal. What is the multiplicative inverse? If the product of two numbers, is each is 1, then each is called the multiplicative inverse. Okay, of the each other or reciprocal of the other. Suppose that what is the reciprocal of, suppose that question given is 13 upon 7. What is the reciprocal? Now we read about reciprocal and multiplicative inverse. Question is multiplicative inverse. Inverse या reciprocal. First things, what is the reciprocal? If the product of two number is 1, then each is called the multiplicative inverse. Okay, so suppose that 5, अब आप 5 का multiplicative inverse पूछा है. So first 5 is a whole number, write the whole number as a fraction. So 5 upon 1. रेसिप्रोकल क्या है? 5 को किससे, ऐसा कोई नंबर आपको फाइंड करना है जिससे आपको मल्टीप्लाई करते हैं आंसर. अब आपको इसकी डेफिनेशन में यही बोला था कि दो नंबर होंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करते क्या आएगा, आंसर क्या आएगा, 1 आएगा. तो क्या हो सकता है ऐसा, इसका उल्टा करते रहे. 1 upon 5, 5 से 5 कैंसिल आउट. इसका मतलब रेसिप्रोकल. देखो यहाँ क्या है, 1 into 1 1 into 1, 1 upon 1, आंसर इज 1. तो इसमें ये बोला है कि दो नंबरों को यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए. तो यहाँ देखिए आप, तो 5 आपका 5 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1 upon 5, उल्टा हो जाएगा इसका. तो 5 से 5 कैंसिल आउट, आंसर क्या आ जाएगा, 1. इसका मतलब रेसिप्रोकल क्या होता है, किसी नंबर जो फ्रैक्शन दे रखी है उसका उल्टा होता है. ठीक है. नाउ राइट द रेसिप्रोकल ऑफ 13 upon 7. सो यू कैन राइट दैट डायरेक्टली अपोजिट 13 upon 7. So answer is reciprocal of 13 upon 7, 7 upon 13.
इनका आप कैंसिल आउट करके देख सकते हो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है या नहीं, आप इनको चेक कर सकते हो। 13 से 13 कैंसिल आउट, 7 से 7 कैंसिल आउट, आंसर इज 1। तो 1 कैसे है, 1 से यहाँ देखो 13 से 13 कैंसिल आउट होता है, इसका मतलब 1 1, 13 की टेबल से 1 टाइम, 13 की टेबल से 1 टाइम, 7 की टेबल से 1 टाइम, 7 की टेबल से 1 टाइम, 1 into 1 1, न्यूमरेटर मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर, आंसर 1 upon 1 is 1। सो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 13 upon 7 is 7 upon 13। कहने का मतलब ये हुआ, ये कह सकते हैं कि किसी भी फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, उस फ्रैक्शन को उल्टा कर दो, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर कर दो। सो दैट जैसे आप बोलोगे कि इसका उल्टा कैसे करेंगे सर, 13 अपॉन 7 का तो आपने क्या कर दिया, 7 अपॉन 13 कर दिया। सपोज दैट जैसे 5 आ जाता, इसको कैसे करेंगे, तो 5 इज ए होल नंबर, सो फर्स्ट थिंग राइट द होल नंबर एज ए फ्रैक्शन, सो 5 अपॉन 1 सिंगल नंबर आ जाता है। जैसे 5 आ गया तो आप इसके अपॉन में क्या करो, 1 करो। अब इसका उल्टा करना आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, 1 अपॉन 5, द रेसिप्रोकल ऑफ 5 इज 1 अपॉन 5। अब 11 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1 अपॉन 11, बिकॉज 11 इज ए होल नंबर, राइट, write the whole number, first thing is write the whole number as a fraction, so 11 upon 1, the reciprocal of 11 is 1 upon 11। okay students, okay, next topic is dividing fractions। so first we read about dividing a whole number by a fractions, dividing a whole number by a fractions, dividing a whole number by a fraction। suppose that question is, for example is 6 divided by 2 upon 3, question is there, 6 divided by 2 upon 3, 6 is a whole number divided by a fraction, 2 upon 3 is a fraction, same case। so we can see 6 is a divided, 6 is a divided and 2 upon 3 is a divisor, 2 upon 3 is a divisor। now follow the given steps, okay। so first thing is write the whole number as a fractions, write the whole number as a fractions, first thing is write the whole number as a fraction। now divide symbol, write it as it is, okay, 2 upon 3, okay, first step is clear। okay, now write the reciprocal of second, there is a given fraction, write the reciprocal of fractions, there is given fractions 2 upon 3, second term। आपको ये याद रखना है कि फर्स्ट टर्म का रेसिप्रोकल नहीं करना, सेकंड टर्म का करना है। इसका मतलब जो राइट साइड में है उस टर्म का आपको क्या करना है, रेसिप्रोकल करना है, और डिवाइड सिंबल का क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ओके, सो फर्स्ट थिंग इज राइट द होल नंबर एज ए फ्रैक्शन, 6 upon 1, write that as it is। in second step write the reciprocal of divisor, so divisor, there is dividend and 2 upon 3 is a divisor, write the reciprocal of divisor, there is divisor 2 upon 3, so 6 upon 1, write the reciprocal of divisor and multiply them, so multiply them, divide का सिंबल क्या करना है, मल्टीप्लाई का कर देना है, और इसका क्या करना है, रेसिप्रोकल ऑफ डिविजन, सो दिस इज डिविजन। ओके, नाउ मल्टीप्लाई, so write the multiply symbol, reciprocal of divisor, so divisor there is a 2 upon 3, reciprocal means उल्टा करना। so now multiply, अब आपको मल्टीप्लाई थोड़ी देर पहले बताया, मल्टीप्लाई कैसे करना है, न्यूमरेटर मल्टीप्लाई न्यूमरेटर, 6 3 is 18 and 1 into 2 2। ओके, नाउ कैंसिल आउट, डिवाइड कर सकते हो, यदि एग्जैक्टली डिविजिबल हो रहा है तो 9 टाइम्स, सो आंसर इज 9। अरे 18 को 2 से डिवाइड करेंगे 9 आ जाएगा, सो इजी है ये तो। अब हम suppose that now next question is 11 divided by 2 upon 7, next question is 11 divided by 2 upon 7, so first thing is write the whole number as fractions, first step in divide 11 upon 1, okay, so first step is write the whole number as a fraction, so write there as it is, okay। in second step first term write there as it is and divide symbol convert into multiply symbol, okay। next write the reciprocal of divisor, this is divisor, okay, reciprocal of divisor, so 7 upon 2, इसका उल्टा हो जाएगा। now
11 into 7, 77. Okay. Now 1 into 2, 2. Now this is 77 upon 2. And so it is 77 upon 2. Now convert. We can convert into mixed fractions. So divide by 2. 77 divide by 2. 38 time. Okay. 76. Now remainder is 1. So write there 38 as a quotient. So 38 is a whole number. Now write there 1 is a numerator and denominator. Write there as it is 32 and 1 upon 2. 38 and 1 upon 2. Answer is 38 and 1 upon 2. Suppose that now we read our next question. Next question is suppose that question is 1 upon 5 divided by 3. So there is given fraction 1 upon 5 and whole number is 3. So first things, write the whole number. Fraction write there as it is, symbol write there as it is, and whole number write the whole number as a fraction. So 3 upon 1. Now first step, first fractions. Okay, first step, this is 1 upon 5, write there as it is. Now divide symbol, write there multiply symbol, convert into multiply symbol. Now write the reciprocal of divisor. So there is divisor is 3 upon 1. So reciprocal of 3 upon 1 is 1 upon 3. Now numerator multiply numerator. So answer is 1. And 5 3 ja denominator multiply denominator. Answer is 1 upon 15. 5 3 ja 15. Answer is 1 upon 15. Okay, students. Next, dividing a fraction by fractions. 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 Suppose that question is 11 upon 5 divided by 5 upon 11. Okay. So this side, both side given fractions. Okay. Now, so first things, first step right there as it is. Divide symbol convert into multiply. Okay. Now divisor. This is divisor. Look at that. 11 upon 5 is divided and second fraction is a divisor. So write the reciprocal of divisor. So 11 upon 5. Okay. Now 11 into 11. Write the multiply the numerator. 11 into 11. 11 into 11, 121, and 5 into 5. Multiply the denominators. 5 into 5, 25. Now you can convert into mixed fractions. So divide by 5. 25 4 ja 25 4 ja 100. Now remainder is 21. Write that as it numerator upon denominator is 25. Okay. Same here. Now next question. Now we take more examples. Okay. Suppose that question is 10 upon 20 divide by 2 upon 5. Okay. Question is. So first is write the dividend as it is. Okay. Now divide symbol convert into multiply symbol. Okay. There is divisor 2 upon 5. Write the reciprocal of divisor. Okay. The reciprocal of divisor 2 upon 5. Reciprocal of 2 upon 5, 5 upon 2. Now multiply the numerator. 10 5 is 50. Okay. So 22 is 40. 0 cancel out 0. So answer is 5 upon 4. Now convert into mixed fractions. Divide by 4. 4 1 is 4 one time. Now remainder is 1 upon 4. Okay. इसको आप डायरेक्ट भी कैसे कर सकते थे, कैसे कर सकते थे? नाउ पहले अगेन. Okay, so now cancel out by 2. 2 1 is 2. 2 5 is 10. Now cancel out by 5. 5 1 is 5. And 5 4 is 20. 5 4 is 20. Now numerator multiply numerator. So 5 multiply 1. Okay. Now this 4 multiply 1. So answer is 4 upon 5. Same answer. Okay. 1 and 1 upon 4.
ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक आप लोगों को अच्छे से समझ में आया है। इससे ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। आप अच्छे से इस वीडियो को 3-4 बार देखो और वीडियो को देख के आप ज़्यादा से ज़्यादा जो मैंने बताया उसको सीखने का प्रयास करो। और वर्ड प्रॉब्लम्स में आपको कीवर्ड है, जो वर्ड प्रॉब्लम के पीछे मैंने आपको कुछ क्वेश्चन बताए थे कि जहाँ मल्टीप्लाई कहाँ करना है, डिवाइड कहाँ करना है, ये सारी चीज़ें आप छोटी क्लासों में सीख चुके हो। अब रही बात, यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है और तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करना न भूले और बेल आइकन को बिल्कुल दबाना न भूले, क्योंकि आपके पास नया वीडियो आएगा तभी आ सकता है जब आप इसका बेल आइकन दबाते हो, तो आपके पास जो नया वीडियो आएगा उसकी सूचना पहुंच जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, गुड नाइट।